Hello, good afternoon, guys. Today is the second lecture of your fluid mechanics, and we are going to start with the properties of fluid. Properties of fluid. This is the most important topic in your fluid mechanics because this is the base and beginning of your fluid mechanics. So आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ही अच्छे से जाननी होंगी ताकि आगे जाके जो भी कंसेप्ट्स आएंगे उनमें ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इज डेंसिटी डेंसिटी और दूसरा नाम है इसका मास डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं, वी डिनोट दिस विद दिस लेटर दैट इज रो। व्हाट डज दैट मीन? डेंसिटी और मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, और देखिए इसका फार्मूला जो होता है दैट इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास को हम डिनोट करते हैं m से एंड वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं v से। डेंसिटी अब क्या इंडिकेट करती है? देखिए गाइस, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये इंडिकेट करती है आपकी कंपैक्टनेस के कितना मटेरियल या कितना आपका जो मटेरियल वो कितना कंपैक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? डेंसिटी अगर किसी की बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है वो मास भी उसका ज्यादा होगा। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम अगर लेके चलेंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो हम बोलेंगे अगर किसी की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है उसकी कंपैक्टनेस बढ़ रही है, दैट इज कंपैक्ट। कॉम्पैक्ट वो उतना ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है वो मटेरियल या वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जिसकी डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब है उसका मास कम होगा, उसकी कंपैक्टनेस उतनी ही कम होगी। कंपैक्टनेस का मतलब हो गया वो ज्यादा डेंस होगा, इसको आप डेंस मीडियम भी बोल सकते हो, डेंस मीडियम और डेंस मटेरियल भी बोल सकते हो इसको। जो जिसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, इसका मतलब उसका मास बहुत कम है। तो इसका मतलब हो गया अगर एक वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, एक वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वो बहुत ज्यादा दूर दूर होगी, तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी कम है, कंपैक्टनेस कम है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट किस में मेजर करते हैं हम इसको? ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, ऐसा यूनिट होता है रो इक्वल टू, हम यहाँ से इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, मास का यूनिट होता है केजी एंड वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। सो द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। अनदर यूनिट इज दैट सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका? सीजीएस में हम मास को ग्राम में मेजर करते हैं एंड वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, या इसको आप लिख सकते हो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था इसका ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट। अब हम बोलेंगे डेंसिटी। हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, इसको हम लिखते हैं रो ऑफ वाटर। ये होती है आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब। और किस टेम्परेचर पे होती है? एट
4 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर मेजर करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे, आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब मिलेगी। अगर आप, इसका मतलब है डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, बट 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब मिलेगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी डेंसिटी डिक्रीज होगी, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तब भी डेंसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है गाइस, ये था आपका डेंसिटी का फर्स्ट प्रॉपर्टी। वी हैव कंप्लीटेड दैट डेंसिटी। सेकंड प्रॉपर्टी इज वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी को हम गामा से डिनोट करते हैं। वेट डेंसिटी इज गामा, विच इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम, एसआई यूनिट इसका क्या होगा, वेट डेंसिटी का। वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, न्यूटन, एंड वॉल्यूम को मेजर करते हैं हम मीटर क्यूब में। सो एसआई यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमको पता है, वी नो दैट वेट इक्वल टू W इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वॉल्यूम के बदले हम लिख सकते हैं, मीटर क्यूब के बदले हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी। इसका मतलब है इस टर्म के बदले हम रो लिख सकते हैं, रो इंटू जी। तो हमें एक, वी गॉट another formula for weight density, that is gamma equal to rho multiplied by g. This is another formula for weight density. We got another formula, that is weight density, rho into g. Rho is the mass density and g is acceleration due to gravity. This was the second property. We are going to move to third property, that is specific gravity. Specific gravity or relative density, or relative density. This is another property जहां पे हमें कंपेयर करना पड़ता है दो फ्लूइड्स की डेंसिटी को। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली इज एस जी, यू कैन राइट in short form that density of fluid, it is the ratio of density of fluid by density of standard fluid, density of standard fluid, density of standard fluid, standard fluid at standard temperature and pressure. If you are going to measure the density of standard fluid, you have to measure at standard temperature and pressure. And if you want to calculate the specific gravity of any fluid, you have to divide by the ratio of the two fluids, that is density of fluid and density of standard fluid. What is that standard fluid? For example, for liquids, if we take the example of liquid, specific gravity of liquid equal to density of liquid, density of liquid upon density of water at density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है, यू नो दैट
कि स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होगा इन केस ऑफ लिक्विड वो वाटर होता है. Water is the standard fluid in case of liquid. So that's why we have written there density of water at 4 degrees Celsius. We consider water as a standard fluid. For gases, if you want to write the specific gravity of gases, specific gravity of gas is density of gas upon density of standard gas. Here we take standard gas as air, density of air at standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure. You know, we have already told you that density of water equal to 1000 kg per meter cube at 4 degrees Celsius. If you want to calculate density of air, it is also 1.21 kg per meter cube at standard temperature and pressure, density of air. For example, why we are going to calculate this specific gravity. For example, if your specific gravity of mercury is given, as 13.6, and the question is that you have to calculate density of mercury. So how you are going to calculate? We know that specific gravity of liquid equal to density of mercury divided by density of standard fluid. You have to take standard fluid, water as a standard fluid. So put the values here. Specific gravity of mercury is already given, 13.6. Density of water, you know that, 1000. And you will get density of mercury. Now the density of mercury is 13600 kg per meter cube. This is how you get density of mercury from specific gravity concept. This was the third property. Now the fourth property is surface tension. Surface tension. Surface tension is another property, and how we will explain this, like this is the beaker. I'm going to explain this, the phenomenon of surface tension, with the help of water in a glass. For example, this is a beaker and you have water in this beaker. You have poured some water in it. Like this is the water filled up to the top. I have to explain the phenomenon of surface tension. If you see that I consider this one particle here, okay, and one particle here. You know that due to cohesion, this particle is being attracted from all the sides. Due to cohesion, this particle is being attracted from all the sides. So this particle will be in equilibrium, because summation of forces from all the sides will balance and will be equal to 0, because this is
symmetrical pull, symmetrical pull. So this particle will be in equilibrium due to symmetrical pull. Now you see this particle, this is open to atmosphere, okay, and all the forces are from the downward sides and only some of the force at the surface, and there is no force which will balance these forces. So these forces are asymmetrical, pull force, pull force. So at the free surface, this is called free surface. Free surface, all the particles are being pulled from the downwards. ठीक है, जो पार्टिकल है वो उसको एक वो पुल नेचर फील करेंगे यहाँ पे, जो फ्री सरफेस पे पार्टिकल होंगे उनको डाउनवर्ड्स अट्रैक्शन लगेगी, और ये जो मेम्ब्रेन है, फ्री सरफेस है, ये कंट्रैक्ट करेगी। ये जो मेम्ब्रेन है, ये फ्री सरफेस जो है ये कंट्रैक्ट करेगी, फ्री सरफेस विल कंट्रैक्ट। दिस कंट्रैक्शन of the free surface is called surface tension. This contraction of the free surface is called surface tension. अब अगर हम फ्री सरफेस को डिफाइन करेंगे, फ्री सरफेस क्या होती है? फ्री सरफेस, इट इज ए सरफेस with constant normal stress. आपको पता है कि जो फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो वो जो प्रेशर पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, वो हमेशा नॉर्मली इस पे एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड और क्या होगा? जीरो शेयर स्ट्रेस, जीरो शेयर स्ट्रेस। इसका मतलब क्या हो गया? जीरो शेयर स्ट्रेस का मतलब हो गया नो एक्सटर्नल फोर्स, external force in tangential direction, tangential direction, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही होगी, क्योंकि ये जो फ्री सरफेस है ये रेस्ट में मैंने कंसिडर करी है। सो आपको ये दो चीजें पता चल गई, फ्री सरफेस क्या होता है एंड सरफेस टेंशन का फिनोमेना आपको पता चल गया कि जो फ्री सरफेस है वो कंट्रैक्ट करेगी ड्यू टू एसिमेट्रिकल पुल फोर्स। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सरफेस टेंशन की। फ्री सरफेस of liquid behaves like stretch membrane, like stretch membrane, and it tries to minimize its area, minimize its area, ये अपने एरिया को कम करेगी up to maximum possible extent। extent, this property is known as surface tension, this property is known as surface tension। देखिए गाइस, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सरफेस टेंशन। कि जो फ्री सरफेस है ये अपने आप को कंट्रैक्ट करेगी, ये अपने आप को कंट्रैक्ट करेगी ड्यू टू एसिमेट्रिकल पुल फोर्स, और उसकी वजह से जो है ये कम से कम एरिया अपना क्या करना चाहेगी? अपना
कम से कम एरिया बनाना चाहेगी, दैट इज इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया अप टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन. मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स का यूनिट यू नो दैट न्यूटन एंड लेंथ का यूनिट इज मीटर. सो SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर. I hope you got this concept very clear. Now, there is one more concept that is related to surface tension, that is surface energy. What is that? If you consider this as a circular part or circular circle, you know that surface tension acts along the circumference, and this circle tries to minimize its area. For example, after the forces were acting and this circle tried to, you know that यहाँ पे आपके circumference पे क्या लगेगी? surface tension. All along the circumference there is surface tension, that is sigma. अब ये सरफेस टेंशन क्या करेगी? इसके एरिया को कम करने की कोशिश करेगी. अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये जो डिस्टेंस x से कम हो गया, ठीक है गाइस, ये डिस्टेंस x से ये इसका जो क्या बोलते हैं इसको डायमीटर है, वो डिस्टेंस x से डिक्रीज हो गया, तो आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस आर स्ट्रेस इनटू डिस्टेंस इज work done, or force into distance is work done. Okay, work done, we can write this work done in contracting the free surface which is equal to, is called surface energy, surface एनर्जी क्या है? वर्क डन. W इक्वल टू, देखिए सरफेस टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन. वही मैंने बोला, सरफेस टेंशन फोर्स इनटू कितनी ये डिस्टेंस से कम हो गया, दैट इज x डिस्टेंस. वो wrote here x. This is work done in contracting the free surface. This is called surface energy. You know that surface tension, अभी अभी हमने पढ़ा था, सरफेस टेंशन किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स को हमने डिनोट किया था N से, मतलब न्यूटन से हम मेजर करते हैं, और लेंथ इन मीटर. अगर हम इसको स्मॉल इंक्रीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल एल से, डेल कैंसल, और वापस हमें सरफेस टेंशन कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जस्ट हमें इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या हमें मिलता है? न्यूटन, डेल्टा एल का यूनिट होता है मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर. न्यूटन मीटर is called joule, and Newton meter is called joule per meter square, that is energy per unit area. So surface tension, in terms of surface energy, we can also write surface tension
in terms of surface tension, that we can also write surface tension in terms of surface energy as energy per unit area. Energy per unit area. So here we can also write that surface tension is also equal to surface energy per unit area. We can write surface tension as equal to surface energy per unit area. So I hope you got this concept. This was the part one property of your fluid mechanics. In next chapter we are going to study the part second of properties of the fluid. So this was all for today. Hope you have enjoyed this video. If you have any doubt, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप अपने कमेंट सेक्शन में, इस चैनल के ब्लॉग कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस बनाऊं आपके लिए. और भी बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आने वाले हैं इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एंड टेक केयर. बाय बाय.